So let's begin. RBI guidelines on all credit facilities. There are so many credit facilities, from project finance to acquisition finance, from LC to BG, from microfinance to gold loan. So we are going to discuss everything in a beat. मतलब एक छोटे से सेशन में सब कुछ देखेंगे. बहुत कुछ है माइक्रो फाइनेंस से लेकर एक्सपोर्ट क्रेडिट, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट. प्राइम बैच के लिए एक अलर्ट है. प्राइम बैच में हमने स्लॉट जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट बंद कर दिया है. रजिस्ट्रेशन आर ऑलमोस्ट फिल्ड. इसमें 200 स्लॉट्स हमने रखा था, तो ऑलमोस्ट फिल होने के कगार पर है. तो उसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए देन यू नीड टू व्हाट्सएप अस, क्योंकि हम इसको अभी से ओपन करना बंद कर दिया है. जो सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे प्राइम बैच उनको मिलेगा. यू नीड टू रिक्वेस्ट. दोनों बैच आपके सिलेक्शन के लिए है. प्राइम बैच में आप एक्स्ट्रा हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो और इंटरव्यू प्रिपरेशन उसमें इंक्लूडेड रहता है. और इसमें आप वन ऑन वन मेरे से बात कर पाओगे. वन ऑन वन आप मेरा जो इनपुट है, मेरा इनसाइट से वो ले पाओगे. ठीक है. और बाकी फैकल्टीज भी इसमें अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि जो हमारे रेगुलर बैचेस हैं उसमें भीड़ थोड़ा ज्यादा होता है, और प्राइम बैच में आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो. हम वीकेंड में एक सेशन आपके जो क्वेरीज हैं, क्या आप अलग कर सकते हैं इस भीड़ से ताकि आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए, लोन के बारे में आप तो सब जानते हैं. लोन का जो डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है वो सेक्शन 21 एंड 35A के तहत देता है. ठीक है. क्रिटिकल डेफिनेशंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, प्रोजेक्ट अच्छा कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे हैं. बुलेट रिपेमेंट लोन मींस प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यू ओनली एट मैच्योरिटी. ठीक है. ये सब क्राइटेरिया आप देख लीजिए, आगे एग्जाम में काम आएगा आपका. ठीक है. और ये सब एप्लीकेबल होता है सारे कमर्शियल बैंक को, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरआरबी, एसएफबी, सबको कैटर करता है ये जो रूल्स. बिकॉज ऑल द नॉर्म्स रिलेटेड टू क्रेडिट फैसिलिटीज आर गवर्न्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके. So they release various circulars under section 21 and under section 35A. 35A में क्या होता है? BR Act, RBI has the authority to give guidelines to banks on in a timely manner. Okay. On 35A you have banking ombudsman, you have AML KYC guidelines and other guidelines related to credit in public interest, guidelines issued by Reserve Bank of India under 35A. So key definitions for your exam point of view: bullet repayment, in gold loan normally you repay at the end of the maturity. आप लोन ले जाते हैं, एक साल के बाद आके रिपेमेंट करते हैं. That is bullet repayment. Otherwise generally we repay in a monthly basis, in a EMI basis. So bullet repayment. Default loss guarantee, that means DLG, like you have CGT MSc, CGFMU. What is that? They are guarantees against loan. ये सब क्या है? आपके लोन के अगेंस्ट में गारंटी है. तो उसी तरह से डिजिटल लोन में होता है एक डिफॉल्ट लॉस गारंटी. एन ऑर्गेनाइजेशन हु टेक्स द रिस्क, अब्सॉर्ब्स द रिस्क, गिव्स ए DLG, डिफॉल्ट लॉस गारंटी. डिजिटल लेंडिंग आपको पता है, LSP, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर मीन एजेंट ऑफ बैंक फॉर डिजिटल लेंडिंग. मान लीजिए नॉलेजिस्ट आप है, मुझे थोड़ा सा और पैसा कमाना है, तो मैं क्या करूंगा, नॉलेजिस्ट में एक लोन का टैब ओपन कर दूंगा. ठीक है. मैं तो बैंक नहीं हूं, वी आर नॉट ए बैंक, बट हाउ कैन आई डू दैट? आई कैन बिकम एन एजेंट ऑफ ए big bank or many banks. So I will become a LSP, lending service provider. Because of my tour and my knowledge in digital era, I will utilize it without taking a banking license. So that kind of service providers are called LSP. So you see nowadays there are so many online loan providers. Some of them are fake, funded by Chinese, banned time to time by Reserve Bank of India. So they are LSPs. DCCO, date of commencement of commercial operation. ठीक है. DCCO आपके प्रोजेक्ट फाइनेंस में नॉर्मली काम आता है जब इंफ्रा फंडिंग आप करते हैं. यू लुक इनटू DCCO. दिस इज द ओरिजिनल डेट बाय व्हिच डेट यू नीड टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, एंड फ्रॉम DCCO योर रिपेमेंट विल स्टार्ट. सो DCCO इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफन इट्स फुल फॉर्म इज आस्क्ड इन बैंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इनकम जनरेटिंग लोन मीन्स लोन गिवन टू जनरेट इनकम, लाइक आई एम गिविंग KCC to you. For what? For you to generate income. Street vendors loan. Consumption loan, any loan that doesn't generate any income but can be used like for sister's marriage, daughter's marriage, for vacation. These are consumption loans. Okay. आई होप ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता है. प्रोजेक्ट फाइनेंस, रेवेन्यू फ्रॉम फंडेड प्रोजेक्ट, प्राइमरी सिक्योरिटी प्लस सोर्स ऑफ रिपेमेंट. प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है? जिस प्रोजेक्ट से रेवेन्यू जनरेट होता है. लाइक आई एम बिल्डिंग ए कमर्शियल बिल्डिंग for shopkeepers. Okay. There will be malls, there will be shops. So that is a project which will generate revenue. And what is the primary security? That building itself primary security, plus what are the additional security? The source of repayment, like my customers who will buy or rent out these shops will give me the cash flow, and
cash flow will primarily go to the bank where I have taken a project finance loan. At least 51% of repayment from the project cash flow. ठीक है, आप जब प्रोजेक्ट फाइनेंस करेंगे, जैसे आपने मुझे कार लोन दिया, यू गेव मी ए कार लोन, मैं कहाँ से फंडिंग करूंगा कार लोन का, ईएमआई कहाँ से दूंगा, either from my salary or I will borrow from my friends, but there is no stipulation, right? जब मैं कार लोन लूंगा, मैं कहाँ से रिपेमेंट करता हूँ ज्यादातर आप देखते नहीं है, मैं सैलरी से दे सकता हूँ, दोस्तों से उधारी लेकर दे सकता हूँ, बट इन ए प्रोजेक्ट फाइनेंस 51% of your money of your repayment should come from the cash flow that is generated by this project. Like I'm creating a building, I'm constructing a building for home buyers, right? So for that project, if I'm taking any funding, the repayment, 51% of repayment should come from my home buyers. Okay, all lenders must have common agreement. Greenfield or brownfield. Greenfield, what is the greenfield project? Greenfield is a new project. Brownfield project means there is a railway station, government of India has auctioned that railway station and gave it to me, said you do enhancement. Project पहले से था, बस मैंने enhancement का काम वहां पे किया है. ठीक है. एक्सपोर्ट क्रेडिट में क्या आता है? प्री शिपमेंट, पैकिंग क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड. व्हाट इज नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड? एवरेज टाइम फ्रॉम नेगोशिएशन टू रिसीट इन नोस्ट्रो. नोस्ट्रो में पैसा आने तक का जो पीरियड है उसको हम नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कहते हैं. प्री शिपमेंट, शिपमेंट होने से पहले जो लोन दिया जाता है प्री शिपमेंट, या फिर पैकेजिंग के लिए जो दिया जाता है उसको हम पैकिंग क्रेडिट भी कहते हैं. पोस्ट शिपमेंट, आफ्टर शिपमेंट टिल रियलाइजेशन द लोन इज गिवन. गोल्ड एंड कोलेटरल, गोल्ड एंड सिल्वर के अगेंस्ट में लोन मिलता है, उसके ऊपर भी हम देखेंगे. ज्वेलरी आइटम्स डिजाइन टू बी वर्न फॉर पर्सनल अडर्नमेंट्स, उसके अगेंस्ट भी लोन मिलता है. ठीक है. एनएफबी, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, गारंटीज. ठीक है, गारंटीज एंड लेटर ऑफ क्रेडिट नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज में आता है. ठीक है. और बोर्ड ये सब लोन को अप्रूव करता है. नॉर्मली बोर्ड का ये सब जिम्मेदारियां होती है. ठीक है, बैंक बोर्ड का. The board of a bank must approve a separate credit policy for each of these 15 areas. ये 15 जो अलग अलग एरिया हैं उनमें सेपरेटली एक पॉलिसी बनाएगा बोर्ड. ठीक है. नॉर्मली कितने टाइप के लोन्स दिए जाते हैं अगर पूछा जाएगा तो 15 टाइप्स के लोन पॉलिसीज होते हैं. चलिए हम MCQ स्टार्ट करते हैं. What is the maximum DLG cap on loan portfolio? Maximum DLG cap 5% है, 5% है. Next, how many days of overdue must DLG be invoked? Yes, 120 days. 120 days. Very good. 120 days. What is the minimum cooling off period for a digital loan borrower? Minimum cooling off period for a digital loan borrower. It is 1 day. What is the maximum LTV for gold loans up to 2.5 lakh? Maximum LTV, yes, 85%. Very good answer. It is 85%. Okay, gold loan above 5 lakh, maximum LTV you all know 75%. 75%. Next question, what is the maximum weight of gold ornaments per borrower? कितने गोल्ड ऑर्नामेंट का लोन लिया जा सकता है? It is 1 kg. What is the maximum tenor of a bullet consumption loan against gold? जल्दी बताइए, आगे बढ़ते हैं. It is D, 12 months. It is D, 12 months.